Hello and welcome viewers. This is lecture number 4 on nuclear physics. In this lecture we will discuss about the magnetic moment of a nucleus. In our last lecture we were discussing about the angular momentum of nucleus. We were discussing the basic properties of a nuclei, and under this series we have discussed the angular momentum of nuclei, and we have concluded from the previous lecture that angular momentum of a nucleus is the vector sum of its orbital momentum and its spin momentum. In this lecture we will discuss about the magnetic moment of a nucleus. So under this topic we will see what is the meaning of magnetic moment and how nuclei can have magnetic moment, and what is the orbital magnetic moment, what is spin magnetic moment, and what is the Bohr magneton, what is magnetic moment of a proton, magnetic moment of a neutron, and nuclear magnetic moment. And we will see the unit of nuclear magnetic moment, that is nuclear magneton. What is nuclear magneton? So all these questions we are going to discuss under this lecture, and after completion of this lecture you will be able to find the answer of these questions कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, एंड अ क्वेश्चन लाइक कि न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस डिस्पाइट दे हैव मैग्नेटिक मोमेंट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन will also be satisfied after the completion of this lecture. So let us begin today's lecture. What we are going to discuss? Nuclear magnetic moment. So first let us define कि nuclear magnetic moment होता क्या है. तो nuclear magnetic moment पढ़ने से पहले we will see magnetic moment क्या होता है. तो magnetic moment एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि किसी भी मैग्नेट के पास कितनी स्ट्रेंथ है और किस डायरेक्शन में वो मैग्नेट ओरिएंटेड है. तो अगर हम लैंग्वेज डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है. मैग्नेटिक मोमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी that gives us the strength of a bar magnet and its orientation. Strength of a bar magnet and the materials which have magnetic properties or which show magnetic behaviors. तो कौन से मटेरियल बार मैग्नेट के अलावा भी कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसके पास मैग्नेटिज्म होता है, जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं. जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है कि जब एक चार्ज पार्टिकल किसी भी सर्कुलर लूप में रोटेट करता है तो उसके पास मैग्नेटिज्म होता है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो उसका हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे सिंपल एग्जांपल हम उसका लेके चलेंगे कि हमारे पास सपोज अ चार्ज पार्टिकल, let's say electron, is revolving in a circular path of radius r, with complete rotation लेने में ये let's say कोई t टाइम ले रहा है. then current इस लूप में कितना होगा हमारे पास? तो current, you know that current is nothing but charge over time. it has negative charge. तो time can be calculated using this distance over velocity. So this is 2 pi r over velocity of revolution of this electron. So this is the current, and we know that कि this current loop behaves as a magnet. This behaves as a bar magnet. और अगर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है तो इट शुड हैव सम स्ट्रेंथ, कि कितनी स्ट्रेंथ की ये मैग्नेट है. तो उसका मेजर देता है हमें मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली म्यू से. तो किसी एक क्लोज्ड लूप के लिए इसका मेजर होता है करंट इनटू एरिया ऑफ दिस लूप, एरिया ऑफ दिस क्लोज्ड लूप इनटू कितना करंट हमारे पास है. तो करंट वी हैव कैलकुलेटेड, एंड एरिया इस लूप का, इस सर्कल का एरिया क्या आएगा हमारे पास? पाई आर स्क्वेयर.
तो वी विल लेफ्ट विद माइनस ऑफ ई वी ओवर 2 pi r into pi r square. So pi and pi get cancelled, r and r get cancelled, so we will left with mu is equals to EVR over 2. So this is the value of magnetic moment of an electron revolving in a path, circular path of radius r with velocity v. So this is the value of magnetic moment for electron. So how we can modify this relation? We can also modify this relation as, it can be written as, we know that MVR is angular momentum होता है, orbital angular momentum L से रिप्रेजेंट करते हैं MVR को, moment of linear momentum, this is angular momentum, orbital angular momentum. सो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दें एंड m से डिवाइड कर दें तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा, सो म्यू विल बी माइनस ऑफ ई एल ओवर 2m. सो दिस इज orbital angular momentum, this is charge on the electron and this is mass of the electron. So and this is magnetic moment. So magnetic moment, this magnetic moment is associated with the orbital motion of the electron. So hence we will write it as orbital magnetic moment. So this is the desired relation for orbital magnetic moment. So we have discussed magnetic moment and orbital magnetic moment. So this is the orbital magnetic moment for a charged particle electron revolving in a circular path of radius r. So what we have concluded from this relation that the orbital magnetic moment of a charged particle is mass of the particle is a constant, 2 is a constant, charge is a constant. So it means that mu L is directly proportional to the angular momentum of the particle. So whenever a particle have an angular momentum and has a net charge, so that particle will have magnetic moment. So this is the conclusion. जब भी किसी पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम होगा एंड उसके पास चार्ज होगा नेट, तो उस वो पार्टिकल पजेस करेगा मैग्नेटिक मोमेंट. सो दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस रिलेशन कि मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है. कब किसी के पास एंगुलर मोमेंटम होगा तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा. सो दिस इज द कंक्लूजन. सो अपार्ट फ्रॉम दिस कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अलावा भी क्या किसी चार्ज पार्टिकल के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो आंसर इज यस. कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट होता है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्बिटल मोशन अ चार्ज पार्टिकल आल्सो स्पिन्स. जैसे कि इलेक्ट्रॉन अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल मोशन इट आल्सो स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस. तो इसकी स्पिनिंग की वजह से इट ऑल्सो पजेस अ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. तो स्पिन की वजह से, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इन मोशन इट हैव सम spin angular momentum, so due to that spin angular momentum it should possess a spin magnetic moment. And what would be the value of that spin magnetic moment? It would simply represented as mu s and its value will be E s over 2m, where s is the spin angular momentum of the charged particle and mu s is the spin magnetic moment of that particle. So in this manner a charged particle would have two types of magnetic moment associated with it. First is its orbital magnetic moment and the second is its spin magnetic moment. So these two types of magnetic moments are associated with the electron. So this is the conclusion. So next we are going to see all these results, these two results, first and seconds, are from the classical theory. कि ये क्लासिकल थ्योरी के बिहार पे हमने ये बातें लिखी है. क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है? क्वांटम मैकेनिक्स भी सेम बातें कहती है बट अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, कि इन दो इक्वेशंस में थोड़ा सा करेक्शन आएगा, नहीं तो फिट नहीं बैठ रहा है ये मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन. तो
तो क्वांटम मैकेनिक्स ने आके इस रिलेशन को थोड़ा सा करेक्ट किया है। तो कैसे करेक्ट किया है, लेट अस सी। यूजिंग क्वांटम रिजल्ट्स, तो ये दिस इज द क्लासिकल रिजल्ट्स एंड यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम रिजल्ट्स क्या कहते हैं कि द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू म्यू एल, दिस इज इक्वल्स टू जी एल ई एल ओवर 2m, and the spin magnetic moment of an electron is equals to gs es over 2m. So gl and gs are the correction factors introduced by quantum mechanics. So what is gl? gl is equals to 1 for electron and gs is equals to 2 for electron. The orbital g factor, this g is known as g factor. The orbital g factor for an electron is equals to 1 and the spin g factor for electron is equals to 2. So we can insert these values in order to find the total magnetic moment of a charged particle electron. So the total magnetic moment of electron would be the vector sum of its spin magnetic moment and its orbital magnetic moment. So this is all about electron's magnetic moment. So we are interested in finding the nuclear magnetic moment. So we are studying here the electronic magnetic moment. Why? So just we are going to correlate this result with the constituents of a nucleus. We know that electron, proton and neutron are, these have some kind of similar properties. So proton के पास भी, प्रोटॉन भी ऐसा ही पार्टिकल है, सेम इसी वे में उसके पास भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, बस उस पर चार्ज अलग है, उसका मास अलग। तो चार्ज एंड मास की वैल्यूज बदल जाएगी, बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो इनसाइड द न्यूक्लियस वी हैव प्रोटॉन एंड वी हैव न्यूट्रॉन। तो जो नेट magnetic moment of a nucleus would be due to its magnetic moment of proton and magnetic moment of neutron. तो जो magnetic moment प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन उन दोनों का सम आएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी न्यूक्लियस का. सो वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस रिजल्ट इन केस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. So let us see what is the magnetic moment for a proton and a neutron. So the magnetic moment of electron in z direction, z component of magnetic moment. Z component means if the external field is in z direction, then the component of magnetic moment in the direction of field will be minus of GL E by 2m LZ. LZ is nothing but ml h cut, the z component of orbital angular momentum. So this is ml h cut, and the maximum ml varies from plus L to minus L, the minus L to plus L, and the maximum value, or you can say the magnitude of ml would be L. So the maximum value of mu L z component of magnetic moment would be minus of GL E by 2m. This is nothing but ml h cut, and ml की जगह we have replaced the maximum value, that is L h cut. So we left with E h cut over 2m L. So E h cut over 2m is nothing but, this is Bohr magneton, this is mu b, E h cut over 2m mass of the electron. This comes out to be 5.78 into 10 to the power minus 5 electron volt per Tesla. This is Bohr magneton, and this is the unit of magnetic moment. This is the unit of electronic magnetic moment, the magnetic moment unit, Bohr magneton. So in terms of Bohr magneton, the magnetic moment of an electron is equals to minus of GL mu b L. So if we know the value of L, GL is known for an electron. So
if these values are known, so in terms of mu b, in terms of Bohr magneton, the values of magnetic moment can be calculated. Similarly, the spin magnetic moment comes out to be minus of gs mu b s. The value of s could be plus minus half. Similarly, the value of this z component of spin magnetic moment would be minus plus, this would be minus plus gs mu b over 2. So this is the value of spin magnetic moment of an electron. So similarly, we can extend this result in case of proton and neutrons. So in case of proton, the magnetic moment of proton, or you can say the z component of magnetic moment of a proton, is equals to E h cut over 2mp. Here the mass of the electron is replaced with the mass of the proton, and this is the value of ml. So ml would be L h cut, this is ml h cut, this is the value of Lz, ml h cut. So the maximum value of z component of magnetic moment would be L, this is E h cut over 2 mp. So this comes out to be E h cut over 2 mp is nothing but, this is nuclear magneton. So this is nuclear magneton and its value is, this is nuclear magneton mu n. तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर मैग्नेटॉन. This is the unit of magnetic moment of a nucleus. Magnetic moment of an electron is measured in terms of Bohr magneton, and magnetic moment of a nucleus is measured in terms of nuclear magneton. So this is the value for nuclear magneton. So in terms of nuclear magneton, the value of z component of the magnetic moment of a proton is equals to this. Similarly, the spin magnetic moment of a proton comes out to be this. So the magnetic moment of a proton comes out to be 2.7928 times the nuclear magneton. तो nuclear magneton का इतना times वैल्यू आती है मैग्नेटिक मोमेंट प्रोटॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की. सिमिलरली द न्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, सो वन क्वेश्चन यू माइट आस्क कि द प्रोटॉन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि प्रोटॉन हैज नो चार्ज, सो हाउ इट कैन हैव मैग्नेटिक मोमेंट. प्रोटॉन के पास चार्ज नहीं है तो इसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे है, ये मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पजेस करता है. तो द आंसर इज कि न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, नेट चार्ज, बट न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड विच हैव फ्रैक्शनल चार्जेस, एंड ड्यू टू दोज एलिमेंट्री चार्जेस न्यूट्रॉन आल्सो possesses magnetic moment. So this is the answer कि why neutron despite have chargeless have magnetic moment, because it is made up of some type of fractional charges, and those charges contribute in the magnetic moment of a neutron. So due to which the neutron has minus of 1.9135 times nuclear magneton. The value of magnetic moment of a neutron is equals to minus of 1.9135 times the nuclear magneton. So the total magnetic moment of a nucleus would be, it comes out to be total magnetic moment of nucleus, it comes out to be magnetic moment of proton and magnetic moment of neutrons. In case of proton, we have two types of magnetic moments, magnetic moment due to its orbital motion and magnetic moment due to its spin motion. Similarly, in case of neutrons, we have the magnetic moment of neutron due to its orbital motion and the magnetic moment of neutron due to its spin motion. So the total magnetic moment of a nucleus is nothing but gi I mu n. In the unit of nuclear magneton, gi is the nuclear G factor, this is nuclear G factor, and the value of I, if you remember from the last lecture, the value of I is the nuclear spin. So nuclear spin is nothing but the total angular momentals
or you can say the total angular moment, spins of protons and neutrons plus the total spin momentum. This is orbital momentum of protons and neutrons, सम है उन सभी का, and plus s. S is the total spin momentum of protons and neutrons. So this is nuclear spin. This is L plus S. So I की वैल्यू ये है हमारे पास. This is nuclear spin. So in terms of nuclear magneton, this is the value of nuclear magnetic moment, and the value of nuclear magnetic moment is approximately 1000 times that of electron. It means what कि न्यूक्लियस के पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन. So this is all about the topic nuclear magnetic moment. So what we have concluded कि the nuclear magnetic moment of a nucleus is due to the magnetic moment of protons and the magnetic moment of neutrons. And the proton possess magnetic moment. Why? Because proton revolves inside the nucleus, as well as proton spins inside the nucleus, and due to its two types of motion, it possesses two types of magnetic moment. Similarly, neutron, despite it is chargeless, it has magnetic moment. Why? Because neutron is made up of some elementary particles, and those particles have fractional charges, and due to those charges it also possesses magnetic moment. So the magnetic moment of a nucleus is the vector sum of the magnetic moment of proton and the magnetic moment of neutron, and the magnetic moment of nucleus comes out to be 1 over 1000 times the magnetic moment of a electron. It means कि बहुत ही कम स्ट्रेंथ का मैग्नेट होता है न्यूक्लियस, बहुत कम स्ट्रेंथ का मैग्नेट होता है. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about we are continuing the basic properties of a nucleus. So we will discuss about the parity of a nucleus, what you mean by parity of a nucleus, and the quadrupole moment in our subsequent lectures. So if there is any query and any types of suggestion you want to give, you can write in the comment box. So till then, stay tuned. Thanks for watching.